Do you know all 12 types of verb conjugation in English? Do you want to improve your English verb tense skills? Then watch this video and learn each of the 12 important English tenses from past, present and future. Here are practical examples with their structure and use. The video also has a quiz to check your understanding. Click on the link given in the description below and take the quiz. Hey everybody, you are watching Learn English with Dr. Saloni Nandan. If you find the video useful, then please press the like button and do not forget it to share with your friends and relatives or those people who may find it useful, and to subscribe to my channel. Let's start with simple present tense. Simple present tense has a subject plus first form of the verb, that is the V1 form of the verb plus object. अब V1 फॉर्म हम कैसे लगाते हैं? प्लूरल्स के साथ V1 फॉर्म वर्ब की, जैसे वर्क, वैसा का वैसा ही रहता है, पर सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ V1 फॉर्म में S लगा देते हैं, जैसे कि she works and they work, I work. Simple present tense indicates an action that is a habit or a repeated action or general truth or something happens at the time of speaking. Simple present tense हमारी habit, कोई repeated action जिसको हम कई सालों से. Now let us look at present continuous or present progressive tense. Present continuous tense has subject plus am is are. Am is are depends upon the subject. If the subject is I, then we use am. If the subject is singular noun or pronoun, we use is. Or if the subject is plural noun or pronoun, we use are. Plus V. V is the main form of the verb, plus ing plus object. It indicates an action happening at the time of speaking. Let's look at the example. Statement, I am going to school right now. अभी जब मैं बात कर रही हूँ तब मैं स्कूल जा रही हूँ. Right now indicates that the time of action is right now, is happening just now. Negative, they are not playing cricket in the garden. Question, is she dancing? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट होता है. परफेक्ट बनाने के लिए हरदम हैव या हैज यूज करते हैं. हैव प्लूरल नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ यूज होता है और हैज सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस के साथ यूज होता है. प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब, दैट इज द V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये दिखाता है कि कब एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और अब तक चलता रहा. Indicates an action which started in the past and has continued up till now. Let's look at the example. We have visited Mumbai many times. अगर पास्ट में एक ही बार होता तो हमने बोला होता we had visited Mumbai once. बट क्योंकि ये एक्शन कई बार हुआ है पास्ट में, तो हम बोलते हैं वी हैव विजिटेड मुंबई मेनी टाइम्स. और पास्ट में हमने बोला होता वी विजिटेड मुंबई लास्ट ईयर. अनदर एग्जाम्पल, शी हैज फिनिश्ड दिस वीक्स वर्क. अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट परफेक्ट का हैज या हैव प्लस बीन
plus verb, that is the V1 form or the main form of the verb, plus ing plus object. ये क्या दिखाता है? That an action started at some point in the past and has continued till now. It emphasizes duration of time. So ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से थोड़ा सा डिफरेंस है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई एक्शन पास्ट में हुआ जो अब तक चलता रहा, पर कोई ड्यूरेशन नहीं बताई हमने. बट इसमें हम ड्यूरेशन बताते हैं कि इतने टाइम तक ये एक्शन पास्ट में शुरू होकर अब तक चलता रहा. So it indicates an action that started at some point in the past and has continued till now. It emphasizes duration of time when the action has been taking place. Statement: I have been going to school since 2000. मैं 2000 से स्कूल जा रही हूँ. Negative: she has not been waiting at the hospital for 2 hours. Question: have you been drinking tea twice a day? So notice the duration of time in the examples. Now let's go to past tense. Simple past tense. Simple past tense is subject plus verb plus ed plus object. It indicates, obviously we all know, it indicates an action that happened in the past and is now complete. वो एक्शन जो पास्ट में हुआ था और अब कंप्लीट हो गया है, उसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं. I went to school yesterday. Not today, yesterday. He did not live in America for 2 years. Negative forms are made with did not and questions start with did. प्लीज ये ध्यान में रखिएगा कि नेगेटिव फॉर्म्स जो होती हैं वो डिड नॉट से बनती हैं और क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं डिड से. लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. डिड यू गो टू बीच yesterday? Now let us look at past continuous tense. Past continuous tense has subject plus was or were depending upon whether the subject is singular or plural, plus verb, that is the main form of the verb, plus ing plus object. It indicates uncompleted action of past or ongoing action or the continuous action of the past that was happening at a specific time in the past. ये उस एक्शन के बारे में बात करता है जो कंटिन्यूअस लगातार चलने वाला एक्शन है पास्ट का, जो किसी एक समय पर पास्ट में हुआ था, काफी देर तक, काफी समय तक लंबा चला था पास्ट में. लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल. आई वॉज गोइंग टू स्कूल when she arrived at my home. The action was interrupted as she arrived. So I was going to school when she arrived at my home. Were you studying when she called you? He was listening to music when the battery of the phone went down. Now let us look at past perfect tense. Past perfect tense has subject plus had, that is the past form of the verb to have, plus past participle of the verb, that is the V3 form of the verb, plus object. It indicates an action of the past that was completed before another action started. Here we are talking about the first past action when there are 2 or more past actions. So past perfect tense क्या बताता है कि वो एक्शन जो पहले कंप्लीट हो गया है, जब दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ उससे पहले जो एक्शन कंप्लीट हो गया है. यहाँ पर हम पास्ट में होने वाले सबसे पहले एक्शन की बात करते हैं. जब 2 या 3 एक्शन उसके बाद होते हैं, उनमें सबसे पहला एक्शन जो है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड नॉट सीन नोत्र दाम व्हेन शी वेंट टू फ्रांस. They rushed to the cricket ground
but the match had finished already. I had gone to school when I was a child. Now let us look at past perfect continuous tense. The past perfect continuous tense is formed with subject plus had plus been plus verb plus ing. So past perfect बनता है had से, past perfect continuous form बनता है had plus been plus verb plus ing के साथ. It shows that an action started in the past and continued up to some point in the past. कुछ पॉइंट के पास्ट के कुछ पॉइंट में स्टार्ट हुआ एक्शन और लगातार कुछ समय तक पास्ट में वो एक्शन चलता रहा, उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. Example, he had been waiting for the bus for more than 2 hours when the bus finally arrived. So, लगातार चलता रहा, had been waiting for the bus. Negative, she had not been studying French in 10th grade. Question, had you been going to market in rainy season? So, नेगेटिव फॉर्म बनेगा हैड नॉट से और क्वेश्चन स्टार्ट होगा हैड से. नाउ लेट अस लुक एट सिंपल फ्यूचर टेंस. Simple future tense is made by subject plus will plus V1 or the main form of the verb plus object. It indicates an action or circumstance or some plan or some intention that will happen in future, something that we have planned for future, something that we intend to do in future, or some action that we plan to do in future. So, सिंपल फ्यूचर टेंस बताता है हमारे उस एक्शन के बारे में जो हमने फ्यूचर के लिए प्लान कर रखा है, जिसे हम फ्यूचर में करने वाले हैं, हमारी इच्छा है फ्यूचर में करने की या वो फ्यूचर में होने वाला है. स्टेटमेंट, I will go to school tomorrow. That is, I have an intention to go to school tomorrow. Question, will you go to school next week? Negative, they will not play football tomorrow. Tomorrow is the word which indicates that the action is going to happen in future. And did you notice that question will start with will and the negative statement will have will not. Now let us look at future perfect tense, which has subject plus will have or shall have plus past participle, that is V3 form of the verb plus object. Notice here it will be he will have. Has is not being used. आपने नोटिस करा कि यहाँ पर हैज यूज नहीं होगा परफेक्ट टेंस में, विल हैव या शैल हैव यूज होगा और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज होगा वर्ब का प्लस ऑब्जेक्ट. ये क्या दिखाता है? इट इंडिकेट्स अ फ्यूचर एक्शन दैट विल बी कंप्लीट बिफोर अनदर इवेंट फिनिशेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर. यहाँ पर हम दो या दो से ज्यादा एक्शन के बारे में बात करते हैं, तो हमारा सबसे पहला एक्शन जो फ्यूचर में कंप्लीट होगा उसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं. जब दो से तीन एक्शन होंगे तो जो सबसे पहला एक्शन हमारा फ्यूचर में कंप्लीट होगा हम उसके बारे में बात करेंगे. By the time you finish cooking, he will have completed his homework. I will have gone to the school by the time you come. So there are two actions. One is you come and I will have gone to school. So पहला एक्शन है gone to school और दूसरा एक्शन है you come. So पहले एक्शन में हम लगाएंगे will have gone to school. Now let us look at future continuous or future progressive tense. Here we have subject plus will be plus V1, that is the main form of the verb plus ing
plus object. It indicates a longer action that will be happening at this time in future or planned events in the future. ये क्या दिखाता है? फ्यूचर में होने वाला, लंबा समय तक होने वाला कोई एक्शन या कोई इवेंट या कोई एक्शन जो हमने प्लान करा हो फ्यूचर में, जो लंबे समय तक चलेगा. I will be going to school every day next year. He will be studying at the library from next week. She will be completing her homework when she will get it. Future perfect continuous tense. It has subject plus will have been plus verb, that is the main form of the verb, plus ing plus object. We use future perfect continuous tense to show that an activity will continue up to a particular event or time in the future and will stop at or before this reference point in the future. So remember, there is some specific time we are talking about here. The activity will continue up to some specific time in the future. और वो एक्टिविटी जब कुछ समय तक फ्यूचर में चलेगी और उसके बाद या उससे उस समय पर रुक जाएगी, उससे पहले या उस समय पर वो एक्टिविटी रुक जाएगी. एग्जाम्पल, इसके लिए हम कैसे ड्यूरेशन यूज करते हैं? फॉर 5 minutes, फॉर 2 months, टुमारो, फॉर 1 year are all durations which can be used with the future perfect continuous tense. Example, you will have been waiting for 2 hours, when our bus will finally arrive. So आप जाएंगे बस स्टैंड पर and you will have been waiting for 2 hours when a bus will finally arrive. So that was future perfect continuous tense. I hope all the 12 tenses are clear to you. Don't worry if they are not. I will be posting videos on each of these tenses separately and you may just go through them and build your tense skills. You may just refresh your memories. You may clear your doubts by those videos. Thanks for watching the video and bye for now until next time.